नमस्कार आपण मानक समस्त को यही भिडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज भिडियो आम +3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स DSE 1 बा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 1 रो 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन करबा। तो आम यूनिट वाइज सब डिस्कशन करबा जेपरि फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट। तो ये सब आम 2 मार्क्स यूनिट वाइज डिस्कशन करबा। आ पूर्व मु 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो बन सारी जो देखि ना प्लेलिस्ट चेकआउट कर पारे। तो आज वीडियो आम DSE 1 रो यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स एंड 3 जेनेरेशन ऑफ राइट्स रो समस्त इंपोर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करबा। नोट्स टी आपन सह शेयर करबी। वीडियो आगे को कहबी जे आपण माने पीडीएफ बा नोट्स टी किपरि भाबे डाउनलोड कर पारिबे। तो चलो तो स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट देखिबा हमें व्हाट इज ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स माने कोन? तो ह्यूमन राइट्स कहले ह्यूमन राइट्स आर इनएलिएनेबल फंडामेंटल राइट्स व्हिच वेरी इंडिविजुअल इज इंटेल्ड टू हैव एज ए ह्यूमन बीइंग। माने प्रत्येक मनुष्य को निजर ह्यूमन राइट्स मानविक अधिकार दिया। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, दे आर सेम फॉर एवरीवन। आ ह्यूमन राइट्स रही समस्त समान। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स मुख्य मुख्य वैशिष्ट्य गुटे कौन कौन? ह्यूमन राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ह्यूमन राइट्स आर इनएलिएनेबल, ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल। तो आम कहले ये सब जो लाइन को आम कौन पॉइंट करछंती। तो बाकी ह्यूमन राइट्स जो आम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा 3 मार्क्स क्वेश्चन जो आम डिस्कस करबा से समय ये सब ब्रीफली देखिबा। तो खाली ओवरऑल जस्ट आम देखि देखि जिबा बुझी बुझी 2 मार्क्स हिसाब से। तो फास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट्स आर इनएलिएनेबल? तो इट मीन्स दैट ह्यूमन राइट्स आर कन्फर्ड on an individual due to the very nature of his existence मान अस्तित्व। these rights can not be transferred on taken away। तो यह ट्रांसफर करबनी। they are inherent in all individual in respective of their caste, creed, religion, sex and nationality। human rights are independent and indivisible। it means that human rights are not capable of being divided माने याकु भाग मध्य करबन capable न। they cannot be denied even when the other rights have already been enjoyed। these rights are मान human rights are independent because the fulfillment of one cannot be had without the realization of two of the other। human rights are universal। तो human rights are universal in nature without any consideration and without expectation। the values such as divinity, dignity and equality which form the basis of these rights, they also apply irrespective of one's origin, status or condition on place of birth। next देखिबा human rights are never absolute to examine। तो it means that the man is a social animal। हम जानते मनुष्य गोटे कौन सामाजिक प्राणी। ओके एंड he lives in a civil society। आउ हम समाज रे मत रहउछंती। सो देयर इज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन माने किछि रेस्ट्रिक्शन रहिछि हमकु मध्य on the enjoyment of his freedom and rights। human rights has also certain limitation। तो हमको फ्रीडम ह्यूमन अधिकार तो दिया किंतु किछि रेस्ट्रिक्ट रहिछि, किछि लिमिट रहिछि हमर। हाउ आर द ह्यूमन राइट्स आर डायनामिक? तो इट मीन्स दैट ह्यूमन राइट्स आर नॉट स्टैटिक। ह्यूमन राइट्स go on expanding with socio-economic, cultural and political developments within the state। judges have to interpret law in such a way as changing value of society। माने ह्यूमन राइट्स रहते बेले बेले सब चेंज हो जाए। जपरिक आम जानता कोविड-19 समय आमर किसी राइट को लिमिटेशन पड़े आसे। तो राइट्स रही चेंजेस आसे ठीक से हीपरी। तो यह सब क्षेत्र चेंज आसे। तो यह डायनामिक हो जाए। नेक्स्ट व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट्स? तो द डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल राइट्स वाज मेनली गिवन बाय थॉमस हॉब्स 1580 to 1679, जॉन लॉक 1630 to 1704 एंड जीन जाकी रूसो 1712 to 1778। तो मन रखी था वो जो मसीहा गुड़िक 1 मार्क्स आसी पारे। हु वाज थॉमस हॉब्स? थॉमस हॉब्स किए ना? थॉमस हॉब वाज द फर्स्ट चैंपियन ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। मन रखी था 1 मार्क्स आसो कंपलसरी माने ग्यारंटी अच्छी। ग्यारंटी माने आम कहीपर इंपोर्टेंट। ओके इन हिज फेमस बुक माने थॉमस हॉब्स फेमस बुक लेविएथान ही एडवोकेटेड दैट नो इंडिविजुअल कुड बी इवन बी डिप्राइव्ड of the right to life। according to him माने कौन? थॉमस हॉब्स को according माने हिसाब रे him all human being are equal without any discrimination। माने समस्त समान किछि जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ओके अपन बुझी पर डिस्क्रिमिनेशन माने कौन? who was John Locke? John Locke in his book to treatise government
argue that every human being has a natural right to life, personality, liberty and property. Right to life ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ତ ଏସବୁ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଖାଲି ଓଭରାଲ୍ ଦେଖିବା। नो ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ରାଇଟ୍ସ, ସରକାର କେବେ ହେଲେ କାହାର ଏଇ ରାଇଟ୍କୁ ନେଇପାରିବେନି। ହୁ ୱାଜ୍ ରୁସୋ? ରୁସୋ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ as the greatest master of natural law school. In his famous book The Social Contract, he stated that all men are born free but everywhere they are in chain। तो ये जो सेकेंड रही आम पूर्व मध्य पढ़ा आमर फास्ट सेमिस्टर पेपर। ओके, नेक्स्ट देखा व्हाट इज द माग्ना कार्टा 1215। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट कार्टर 1215। इट इज सेड टू बी the most significant constitutional document of all human history. The main theme of it was the protection against arbitrary acts by the king of England। तो किंग जो इंग्लैंड किंग थे आर्बिट्रारी गोटे आक्ट थिला से जो द मेन थीम थिला ताको प्रोटेक्शन करबा। ओके, प्रोटेक्शन एगेंस्ट आर्बिट्रारी एक्ट बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो मन रखु 1215। ओके, व्हाट इज द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689। The English Bill of Rights was enacted in December 1689 by British Parliament. By it, the British Parliament declares its supremacy over the Crown in clear terms. The Bill of Rights codified the customary law and clarified the rights and liberty of the citizen। What is the American Declaration of Independence 1776? The first colonies to revolt against England। तो फर्स्ट कौन थे जहाँकि इंग्लैंड विद्रोह करथिला ता अगेंस्ट where the 13 states of America। These states मान जो अमेरिका 13 states declared their independence from the mother country on 4 July 1776। तो जो डेट टा मन रखिथांतु। The declaration changes the king with tyranny and affirms the independence of the American colony। नेक्स्ट देखा द बिल ऑफ राइट्स 1791। द US Constitution was enacted on 17 September 1787। The Bill of Rights of citizen of US Constitution protected against the abuse of power the official of the states। The French Declaration of Rights of Men and the Citizen 1789। The on 4th August 1789 the National Assembly of France proclaimed the rights of men and the citizen। The rights were proclaimed in 17 articles। तो ये जो राइट था तार 17 आर्टिकल था मन रखिथांतु। दिस डिक्लेरेशन सर्व्ड एज डेथ वारंट द ओल्ड to the old regime and introduce a new social and political order। next देखिबा what is UN Charter 1945। the UN Charter was drafted, approved and unanimously adopted by the all delegates of SI states who attend the United Nations conference in San। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो सैन फ्रांसिस्को होता जो मैंने अटेंड करते से द्वारा यह ड्राफ्ट है आप्रूव होता और अनएनिमसली आडप्ट आडप्ट मैंने ग्रहण कर इट कंटेन प्रोविजन्स फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स जहाँकि ह्यूमन मानविक अधिकार को प्रोविजन जो कंटेन था प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन माने सुरक्षा देवा और प्रोत्साहन करवा। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन 10 December 1948। इट कंटेन 30 आर्टिकल्स तो 30 आर्टिकल थिला। इट इज एन आइडियल ऑफ ऑल मैनकाइंड। ओके, नेक्स्ट what is International Convention of Human Rights? The Universal Declaration of Human Rights lacked enforcement। This deficiency was sought to be removed by adopting two convent in 1966। These two convent जो 1962 convent होता तो these two convenants are International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights। Civil and Political, economic, social and culture। okay, what is first generation of human right? The first generation of human rights comprised of the citizen right to liberty and equality। first generation liberty और equality। it is said to be emerged in 17th and 18th century। 17 18 शताब्दी में होतिला। the central idea were personal liberty and protecting individual against violation by the state। state जो violation करछि individual को ताकू सुरक्षा देबा, प्रत्येक individual को सुरक्षा सहित स्वतंत्रता देबा, यह फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स रो मैंने कौन आम कह कोर थीम थिला। ओके, नेक्स्ट व्हाट आर द सिविल राइट्स? सिविल राइट कौन ना सिविल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल आर फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रेस, पर्सनल ओनरशिप। राइट डाउन द नेम ऑफ सम पॉलिटिकल राइट्स। किसी राजनीतिक कौन अधिकार जेपरिक राइट टू एक्सरसाइज
to public right to vote, citizen control over administration. Next देखिबा what is the second generation of human right? The second generation of rights are the social, economic and cultural. First हम देखिथिले फास्ट टाइम कौन देखिले सिविल, तो देखंतु मु क्लियर कर दूची आपनको। फास्ट टाइम देखिले लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ओके। सेकेंड टाइम देखिबा सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स, तो these rights are related to equality and began to be recognized by governments after World War II. Okay, what is third generation of human right? The third generation of human right कौन? Now the third generation of human rights are based on solidarity. These rights are embrace collective rights of society on people's. The rights are the right to sustainable development, to peace, a healthy environment. Write the name of some non-governmental international organization. तो किसी नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रही जपरकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाच। तो ये यूनिट 1 किसी 2 मार्क्स क्वेश्चन। आमर यूनिट वाइज 2 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कसन सरला आम 3 मार्क्स को डिस्कस करवा। नेक्स्ट टाइम आप सहित यूनिट 2 जहाँकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नोट्स शेयर करी। तो यहीपरी वीडियो चैनल एठी आंतु नोट्स को शेयर करूँ जहाँद्वारा कि नोट्स समस्त पहुँची पार और समस्त स्टडी हेल्पफुल हो। थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।